Okay, Assalamu alaikum everyone. I think we are good to start today's session. आज का session start करते हैं. And today we are going to start our paper 2. Paper 2 बच्चों हम लोग start करेंगे आज की class के अंदर. In today's session, first I'm going to give you a brief introduction of the syllabus. कि paper 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या changes हैं, what are the things that we need to focus on, and ये सारी बातें बच्चों करने के बाद फिर हम लोग कुछ बेसिक्स भी आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे अबाउट पेपर 2 एज वेल. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. लेट मी ओपन द सिलेबस. Okay ji, first let's discuss the breakup of the syllabus that we have. It's a totally new breakup that we need to work on. Okay ji, so paper 2 bachcho, now paper 2 will be having the time of the paper will be 1 hour 45 minutes. Previously examiner आप लोग को 2 hours देता था, but now the time is being reduced to 1 hour 45 minutes. Further, you should know the weightage of the exam is now 50%. पहले 60% was of paper 1 and paper 2 was only of 40%. But अब examiner ने दोनों क्या करा, 50-50% कर दिया है. Another change that we have is previously paper 2 was of 50 marks, but now paper 2 will be consisting of 75 marks. Moreover, आपके syllabus का जो content है from 7 to 10 that will be included in your syllabus. All questions are compulsory, calculators are not allowed, and externally accessed, like you need to perform each and everything on the paper. Now let's see, अब हम लोग syllabus content 7 to 10 को ऑब्जर्व करते हैं, और जो जो चीजें नई ऐड हुई हैं बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए, और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट यू विल बी हैविंग, आप लोग को एडवांटेजेस क्या होंगे सिलेबस को पढ़ने के. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द थिंग्स आज के सेशन के अंदर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, here you go. At the start of the syllabus बच्चों you can observe standard flowchart symbols must be used by students when drawing the flowchart. Logic gate symbols must be used by the students by drawing the logic circuits. Format in which pseudocode will appear in examination. सर इसकी बात का मतलब क्या हुआ कि फॉर्मेट इन विच pseudocode will appear? तो बच्चों प्रीवियसली क्या होता था, आप अपने एग्जाम के अंदर कोई भी फॉर्मेट मेंशन कर दो, किसी तरह भी आप अपना कोड लिख दो, एवरीथिंग वाज एक्सेप्टेड बाय द एग्जामिनर. एग्जामिनर सब एक्सेप्ट कर लेता था. लेकिन अब क्या हुआ है, अब हमारे पास एक डिफाइंड फॉर्मेट है, हमारे पास एक डिफाइंड फॉर्मेट है pseudocodes का, दैट वी नीड टू फॉलो. अगर आप वो फॉर्मेट फॉलो नहीं करोगे तो एग्जामिनर विल नॉट बी गिविंग यू मार्क्स. आपका एग्जामिनर आप लोग को मार्क्स अवार्ड नहीं करेगा इफ यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट. अब बात करते हैं यहाँ पे अनदर थिंग, एक और बात अगर करें यहाँ पे, आप लोग को मुझसे पढ़ने का फायदा क्या होगा. मतलब एक सवाल आता है कि वी आर स्टडिंग फ्रॉम सर मैक, सो व्हाट इज द एडवांटेज. तो आप लोग का एडवांटेज बच्चों क्या होगा, ये जो फॉर्मेट एग्जामिनर डिफाइन कर रहा है, जो एग्जामिनर ने फॉर्मेट डिफाइन किया pseudocodes का, ये सारे ए लेवल्स के टीचर्स, ये सारे ए लेवल्स के टीचर फ्रॉम लास्ट
3 to 4 years से ये फॉर्मेट पढ़ा रहे हैं। तो for O level teachers it will be a new format, but the teachers who are teaching A levels computer science, I am teaching from last 9 years, तो जो टीचर्स पुराने मतलब 2 3 4 साल 5 साल से पढ़ा रहे हैं ए लेवल्स, तो उनके लिए बच्चों ये फॉर्मेट न्यू नहीं है, इट्स एन ओल्ड फॉर्मेट। तो जो ए लेवल में सूडो कोड का फॉर्मेट था, अब एग्जामिनर ने ओ लेवल्स के अंदर भी वही फॉर्मेट क्या करा है, एग्जाम इंक्लूड कर दिया है। नाउ कुछ बच्चों को अब सूडो कोड समझ में नहीं आ रहा होगा होता क्या है, बात करेंगे अभी आगे जाके। लाइक इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर उसने आपके पास स्टैंडर्डाइज कर दिया है। मोर ओवर अब ये बता रहे बच्चों, स्टूडेंट्स आर advised to program solutions to a variety of different problems on a computer using one of the high level programming languages, like either you can use VB.NET, Python, VB.NET or Java. The language that we are going to work on बच्चों will be Python. तो Python के अंदर भी हम लोग कुछ कोडिंग शोडिंग करेंगे अपने पेपर 2 के अंदर, so that you should have an idea कि how to code, how to program in Python as well. स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। We need to study बच्चों algorithm design and problem solving approach, ये सब थ्योरी है। These are the theoretical stuff that we need to understand, that we need to read. These are the structure diagrams, flow charts and pseudocodes. हम लोग बच्चों मेन फोकस हमारा होगा ऑन pseudocodes. फर्दर एक नई चीज बच्चों आपके एग्जामिनर ने इंक्लूड करी है, and this is a new topic that examiner has included in your syllabus, that is called bubble sort. अब आप लोग के माइंड में चल रहा होगा सर बबल सॉर्ट क्या होता है। सर क्वेश्चन आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ, इट्स अ न्यू सिलेबस और एग्जामिनर 110% आपको चॉइस देगा, इधर यू कैन राइट द कोड इन सूडो कोड और यू कैन राइट इन एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैं आपको दोनों करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, बबल सॉर्ट इज वन ऑफ द न्यू एल्गोरिथम दैट वी नीड टू स्टडी। बाकी सब पुरानी चीजें सारी आपके पास, ऑल द थिंग्स आर प्रीवियस। नाउ दिस इज अनदर न्यू टॉपिक बच्चों, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन या स्ट्रिंग हैंडलिंग कहते हैं इसे हम लोग। सो ये एक नया टॉपिक है, आपके एग्जामिनर ने ये नया टॉपिक इंक्लूड करा है। जब पढ़ेंगे तो फर्दर मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, लाइक वी विल बी ऑन दिस टॉपिक आफ्टर 20 days। आफ्टर दिस बच्चों आपके एग्जामिनर ने कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, माइनस, डिवाइड, पावर, मॉड, डिव, लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके एग्जामिनर ने डिफाइन कर दिए हैं। अभी हम इन सब चीजों के ऊपर बात कर देंगे। फर्दर अनदर न्यू टॉपिक बच्चों, दिस इज रैंडम। तो रैंडम भी एक नया टॉपिक आपके एग्जामिनर ने इंक्लूड करे, एंड दिस इज अनदर फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स may have 2 parameters। तो पैरामीटर्स भी आपके एग्जामिनर ने एक नया टॉपिक इंक्लूड करे, दैट वी नीड टू स्टडी। ये सब न्यू टॉपिक्स हैं आपके पास। तो वैसे इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आपका जो ए लेवल्स का सिलेबस है, तो आपके एग्जामिनर ने 50% एएस का पेपर 2 उठा के आप लोग को ओ लेवल्स में करवा दिया है। इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, दोनों बातें करेंगे थोड़ी देर बाद। मूविंग फॉरवर्ड, देन बच्चों दिस इज समथिंग थियोरेटिकल स्टफ है कुछ आपके पास। देन एरेज है आपके पास। पहले आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ 1D एरेज थे, अब आपके एग्जामिनर ने 2D एरेज भी आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड कर दिए। एंड अनदर बच्चों थिंग दैट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस इज फाइल हैंडलिंग। बिल्कुल न्यू टॉपिक है, लेकिन अगेन व्हाट एडवांटेज यू पीपल विल बी हैविंग, यू पीपल विल बी हैविंग एन एडवांटेज दैट बच्चों टेक्स्ट फाइल्स ए लेवल्स का पार्ट था सिलेबस का। आई वाज टीचिंग फ्रॉम लास्ट 9 years, अब आप लोग को भी पढ़ाना होगा। लेकिन अगेन एग्जामिनर ने थोड़ा सा इसके अंदर कंटेंट के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है कि आप लोग को टेक्स्ट फाइल थोड़े से कम लेवल का पढ़ाना है एज कम्पेयर टू ए लेवल्स। ए लेवल्स में अगर मैं 100% पढ़ा दूं तो आप लोग को लाइक 40-50% पढ़ाना है, इतना कंटेंट आपके एग्जामिनर ने इंक्लूड करा है। आफ्टर दिस बच्चों डेटाबेसेस, अ वंडरफुल टॉपिक, ब्यूटीफुल टॉपिक, बट इस बार आपके पास पहले जो डेटाबेसेस थे उससे ये वाला डेटाबेस बिल्कुल चेंज है। सर बिल्कुल चेंज, बिल्कुल चेंज मतलब बच्चों
प्रीवियसली आप लोग काम करते थे ऑन क्वेरी बाय ग्रिड एग्जाम्पल. क्वेरी बाय ग्रिड एग्जाम्पल वाज अब बच्चों वाला स्टफ. लाइक आई रिमेंबर आई यूज्ड टू टीच डेटाबेसेस ओनली इन वन क्लास. मैं एक क्लास के अंदर पूरा डेटाबेस कंप्लीट करवा देता था. बट नॉट नाउ. अब आपके पास बच्चों आप लोग को एक्चुअल पाइथन माई एसक्यूएल की कोडिंग करनी होगी इन डेटाबेसेस. मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन अगेन इट्स अ न्यू थिंग, नया स्टफ है आपके पास दैट वी नीड टू स्टडी. यू कैन सी these are the statements that we need to work on. A1 के अंदर बच्चों ये स्टेटमेंट्स अराउंड आपके पास 12 to 15 स्टेटमेंट्स हैं. लेकिन यहां पे एग्जामिनर ने क्या किया आप लोग को 1 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट्स आपके एग्जामिनर ने आप लोग को प्रोवाइड करी है दैट वी नीड टू वर्क ऑन. तो वही वाली बात है कि ए लेवल्स के कंटेंट को थोड़ा सा मिनिमाइज करके आप लोग को दिया जा रहा है. अब इट्स अ गुड थिंग, बात करेंगे इसके ऊपर. आफ्टर दिस बच्चों दिस ये चीज मुझे समझ में नहीं आई कि व्हाई एग्जामिनर इंक्लूडेड लॉजिक गेट्स इन पेपर 2. आई थिंक वन ऑफ द रीजन कैन बी कि एग्जामिनर चाहता था कि बच्चे जो ग्रेड अपना कम स्कोर कर रहे हैं उनका ग्रेड अच्छा आ जाए. दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन कि व्हाई एग्जामिनर इंक्लूडेड लॉजिक गेट्स इन paper 2 because logic gates is a easy topic. So that's it. For your paper 2 जब पढ़ते रहेंगे बच्चों तो मैं आप लोगों को साथ साथ फर्दर गाइड करता रहूंगा. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब. एंड लेट्स स्टार्ट आवर पेपर 2. So when we talk about बच्चों before we start paper 2, आप लोग को पेपर 2 अब जो नया सिलेबस है दैट इज ओ लेवल्स कंप्यूटर साइंस 2023 में आप लोग को एडवांटेज क्या है सिलेबस पढ़ने का. अगर आप लोग ए लेवल्स के अंदर अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पिक करते हैं मैथ्स, सीएस एंड फिजिक्स और एनी अदर सब्जेक्ट, तो बच्चों सीएस के अंदर आप लोगों ने ऑलरेडी आपने 60% कंटेंट ओ लेवल्स के अंदर ही क्या कर लिया होगा, कवर अप कर लिया होगा. तो ए लेवल्स की सीएस आप लोग के लिए अब बच्चों वाली हो जाएगी. तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट दैट यू कैन पिक इन योर ए लेवल्स. अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं देन यू कैन गो विद अनदर कॉम्बिनेशन मैथ्स, CS and accounts. Maths, CS, business, maths, CS, economics. So this is also one of the combinations that you can opt and you can pursue your career in computer science in future. तो ये कॉम्बिनेशन भी बच्चों आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं. एंड अगेन एडवांटेज क्या होगा कि 60% कंटेंट तो आप लोगों ने ओ लेवल्स में ही पढ़ा हुआ है. आप लोग के लिए रिवीजन होगा ए लेवल्स, आसान होगा आप लोग के लिए ए लेवल्स, आप लोग को मजा आएगा ए लेवल्स पढ़ने के अंदर कंप्यूटर साइंस. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेज दैट वी हैव फॉर ऑफ द न्यू सिलेबस. अगर आप लोग के माइंड में कोई सवाल आ रहे हो, कोई क्वेश्चंस हो, फील फ्री टू आस्क, पूछ लेगा. ठीक है, रिगार्डिंग द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और एनीथिंग यू कैन आस्क. नाउ मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं बच्चों. यहाँ पे अब let's start our paper 2. And the first topic that we are going to start, this topic is called algorithms. Now, when we talk about algorithms, algorithms are of two types. The first type is called flowcharts. And the next type is called pseudo codes. Now, सबसे पहले बच्चों आप लोग को एल्गोरिथम पता होना चाहिए क्या होते हैं. मैंने रिक्वेस्ट करी अब्दुल्ला से, मैंने बोला अब्दुल्ला चाय बनाना आती है? अब्दुल्ला ने बोला यस सर.
आई नो हाउ टू मेक टी। अब्दुल्ला ने बोला सर आप एक बाउल के अंदर, एक वेसल के अंदर वाटर बॉईल करें, वाटर जब बॉईल होने लग जाए तो आप उसमें शुगर ऐड कर दें, आप उसमें टी ऐड कर दें, आप उसमें मिल्क ऐड कर दें, इन सब को बॉईल करें और उसके बाद इसको फिल्टर कर लें एक कप के अंदर। सो सर आपकी टी इज रेडी। सो एल्गोरिथम्स बच्चों फिर क्या हुए आपके पास? आई कैन सी फ्यू डेफिनेशंस इन माय चैट ऑप्शन, बट आई वुड लाइक टू कमेंट। एल्गोरिथम्स आपके पास स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं टू परफॉर्म एनी टास्क। कोई भी टास्क परफॉर्म करना आप लोगों ने, अगर आप उस चीज को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कर रहे हो, आप उस चीज को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम्स। ठीक है, सो हमने यहाँ पे डिफाइन करा एल्गोरिथम्स आर ठीक है, दैट्स गुड। आई होप अब आप सबको बिरयानी बनाना आ गई होगी भाई। स्टेप बाय स्टेप instructions to perform a task। अच्छा, मोर ओवर बच्चों, स्कूल की एक बात यहाँ पे साफ नहीं करी तो आप लोग को एक बात बताऊं मैं। अब आप लोग पेपर 2 के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ेंगे बच्चों दैट आर न्यू इन योर सिलेबस, एंड आपके स्कूल के टीचर्स, ऑफ कोर्स आई एम नॉट डाउटिंग ऑन देयर स्किल्स, एवरी टीचर इज अ गुड टीचर, कोई टीचर खराब नहीं होता, हर टीचर बेहतरीन टीचर होता है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग अब एक कंटेंट, एक चीज पढ़ाते हुए आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं फ्रॉम लास्ट 9-10 years हम लोग पढ़ा रहे हैं, सेम कंटेंट पढ़ा रहे हैं। अब वो कंटेंट जब ओ लेवल्स में आ गया तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? बिकॉज हम तो पढ़ा ही रहे हैं वो कंटेंट, बिकॉज मॉर्निंग में तो वी ओनली टीच ए लेवल्स। लेकिन वो लोग ओ लेवल्स पढ़ा रहे होते तो फॉर देम इट्स अ न्यू कंटेंट। तो अगर आप लोगों को कोई चीज पता चल रही है यहाँ पे, कोई नई चीज है, तो ट्राई टू शेयर द कंटेंट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेगा, ताकि जितनी ज्यादा आप लोग नॉलेज शेयर करोगे उतना उतना अच्छा बच्चों आप लोग की, और आप लोग की स्किल्स क्या होती है, शाइन होगी। ठीक है, सो आप लोग जो यहाँ पे सूडो कोड के अंदर बहुत सारी मैं आपको चीजें सिखाऊंगा, तो यू कैन शेयर दैट स्टफ विद योर फ्रेंड्स एज वेल, बट नॉट योर शॉर्ट लाइव अकाउंट्स। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ टास्क इज कॉल्ड एल्गोरिथम्स। नाउ हमारी क्लास में बच्चों आज मेन फोकस हमें किसके ऊपर करना है? सूडो कोड्स के ऊपर। तो पहले हम लोग पूरे अपने सूडो कोड्स कंप्लीट करेंगे, बाद में कोई और चीज देखेंगे। सो स्टार्टिंग विद डेटा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा, अगर हम लोग डेटा की बात करते हैं बच्चों, डेटा क्या होता है आपके पास? रॉ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। रॉ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। हर चीज डेटा है बच्चों। मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी, दिस इज ऑल्सो डेटा। आपके मोबाइल में कॉन्टेक्ट्स हैं, इमेजेस हैं, दे ऑल आर डेटा। अब इस डेटा को हम लोग क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स। वी क्लासिफाई दिस डेटा इनटू डिफरेंट टाइप्स एंड we call that as data types. So when we talk about data types, तो बच्चों data types आपके पास multiple होती है। The first data type that we need to talk about is called a string. The first data type that we need to talk about is called a string. String क्या होती है आपके पास? It's a collection। अभी करंटली मैं आप लोग की पेपर 2 की बेस बना रहा हूं, मैं आप लोग की सूडो कोड की बेस क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, सो स्ट्रिंग क्या होता है आपके पास? इट्स अ कलेक्शन ऑफ
Alphanumeric. It's a collection of alphanumeric characters including special characters as well. Sir, कोई example? Before I write the example, always enclosed in double inverted commas. अब अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूं बच्चों, लाइक मैक CS 2210. So this is one of the examples of string enclosed in double inverted commas. तो कुछ भी बच्चों आपके पास आ सकता है in this double inverted commas. बस string हो, special characters हो, numbers हो, but it should be enclosed in double inverted commas. I was teaching in one of the colleges. एक बच्चे ने सवाल किया, सर कुछ भी आ सकता है इसमें? मैंने बोला जी बेटा कुछ भी. उसने वापस बोला सर कुछ भी. तो मैंने बोला जी बेटा कुछ भी आ सकता है आपके पास, but it should be just enclosed in double quotation marks. ठीक है? So this was the first data type that we called as a string. After string बच्चों, the next data type that we have is called integer. हम इस डेटा टाइप को बच्चों क्या कहते हैं? We call this data type as integer. तो integers क्या होते हैं आपके पास? Simply they are whole numbers. whole numbers को हम लोग क्या कहते हैं? integers कहते हैं, जिसका fractional part now, example 10, 210, minus 105, 80. So these are the numbers. whole numbers को हम लोग क्या कहते हैं? We call them as integers. Any whole number. Yes, of course, Zad. The third data type that we have is called real. Real numbers क्या होते हैं हमारे पास? Real numbers are, अगर ये whole numbers है तो real numbers क्या होंगे? They are fractional, या you can say decimal numbers. So decimal numbers को आप लोग क्या कहते हो? You call them as real numbers. Example 18.11 minus 21.19 200.0. So सारे fractional numbers को हम लोग क्या कहते हैं? Decimal numbers को हम लोग क्या कहते हैं? We are going to call them as real numbers. कोई बच्चे मुझे कोई और नाम बता सकते हैं रियल नंबर्स का? आप लोग के स्कूल में या कभी आप लोगों ने पढ़ा हो कहीं पे? Any other name for the real numbers? You can write in the chat option. Any other name for the real numbers? या आप लोग ने अभी पेपर 2 स्टार्ट ही नहीं करा स्कूल या स्कूल? वल्गर, इमेजिनरी है, इमेजिनरी अनाया, ये पता नहीं, मैंने तो पहली बार नाम सुना है. सर साया, क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग भाई? अच्छा 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 अच्छा, you people are confusing with that maths stuff. नहीं, मैथ्स के अंदर हाँ बिल्कुल आप कुछ और बोलते होंगे, but over here we call them as floating point numbers भी बोला जाता था, but that was in the previous syllabus. अब इस new syllabus के अंदर बच्चों you are not going to call them as floating point numbers, you are just going to call them as
रियल्स, ठीक है। तो दैट्स व्हाई बस मैं आप लोग से कंफर्म कर रहा था कि आप लोग ने अगर इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आप लोग बोलते थे पहले, तो अब यू आर जस्ट गोइंग टू कॉल देम एज रियल नाउ। अब सिर्फ रियल बोलेंगे हम लोग। नाउ द फोर्थ एग्जांपल ऑफ द डेटा टाइप बच्चों, दिस इज कॉल्ड चार। चार क्या होता है आपके पास? दिस स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर। और इस डेटा टाइप के अंदर वी represent a single character, a single character only. Example A, example small a, example at the rate of, example 2. लेकिन इसकी बच्चों खास बात क्या है आपके पास? That it is always enclosed in, it is always enclosed in, it is always enclosed in single inverted comma. तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग क्या करते हैं? चार को एनक्लोज करते हैं। सो ये आप लोग को बात पता होनी चाहिए अबाउट चार। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर दैट वी हैव इज कॉल्ड, द नेक्स्ट कैरेक्टर दैट वी हैव इज कॉल्ड बूलियन। तो बूलियन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? बूलियन हम लोग यूज करते हैं बच्चों, इसके अंदर सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती है। ईदर इट कैन कंटेन ट्रू और इट कैन कंटेन false. So your boolean variable can contain only two values. Either it can contain true or it can contain false. The sixth and the last data type that we have, this data type बच्चों is called date. और अगर आपको date represent करनी हो तो we can use this data type. The format of date is dd, mm and yyyy. अगर मैं आज की डेट लिखता हूं तो it can be 14/10/2022. So these are all the 6 data types बच्चों that we need to use in this pseudocodes stuff: string, integer, real, char and boolean. Now moving forward, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। So we are having a space over here, यहाँ से start कर लेते हैं। Now the next thing that we need to talk about in pseudocodes, this is called variables. So variables बच्चों क्या होते हैं आपके पास? Variables are actually entities that can store, entities that can store a value. ये एक ऐसी एंटिटी होती है बच्चों जो आपके पास वैल्यू को क्या कर सकती है? स्टोर कर सकती है। तो वी कॉल दैट एंटिटी एज अ वेरिएबल। फर्दर यू शुड नो it can change its value during the execution of प्रोग्राम। तो वेरिएबल्स बच्चों क्या कर सकते हैं आपके पास? दे कैन चेंज देयर वैल्यूज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। सर क्या मतलब हुआ इस बात का? तो लेट्स सी बच्चों, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करा, नेम। मैं लाइन नंबर 1001 के ऊपर कोडिंग कर रहा था। I define a variable, that variable was name is equals to, let's say, Anaya. So this is, ये हमारी वैल्यू है बच्चों, दिस इज आवर वैल्यू। इस वैल्यू की डेटा टाइप क्या है? द डेटा टाइप ऑफ दिस वैल्यू इज स्ट्रिंग। दिस इज द सिंबल फॉर, ये बच्चों हम लोग सिंबल यूज करते हैं फॉर
assignment. This is the symbol बच्चों for assignment that we are going to use. हम लोग is equal to use नहीं करेंगे अब assign करने के लिए, ये arrow यूज करेंगे. ये एरो जिस चीज के ऊपर पॉइंट कर रहा होगा वहां पे हमारी वैल्यू स्टोर हो रही होगी. एंड दिस नेम इज एक्चुअली बच्चों आर, ये जो नेम है हमारा, दिस नेम इज आवर वेरिएबल, ये हमारा वेरिएबल है. दिस नेम इज आवर वेरिएबल. अब मैं कोडिंग करते 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 आई रीच टुवर्ड्स अ लाइन. मैं कोडिंग करते 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 आई रीच टुवर्ड्स 1098 तक पहुंच गया. अब यहां पे मैंने नेम को डिफाइन करा. नेम इज इक्वल्स टू, लेट्स से मैंने नेम की वैल्यू चेंज कर दिया टू मनाहिल. नाउ लाइन नंबर 1097 तक the value of the name was Anaya, but after line number 1098 the value of name becomes बच्चों Manahil. So अगर definition दिखाऊं, variable एक entity है that can change its value during the execution of the program. जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था इसकी वैल्यू पहले कुछ और थी, अब क्या हो गई, चेंज हो गई. So this is the beauty बच्चों of the variables. ये अपनी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं और ये बच्चों वैल्यूज को स्टोर भी करते हैं. तो दे स्टोर अ वैल्यू एज वेल. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल. अब जो ये वेरिएबल का बच्चों ये नाम है ना, जो मैंने अभी नेम रखा हुआ है, इसके भी कुछ रूल्स हैं जो आप लोग को पता होना चाहिए. देयर आर 5 रूल्स दैट वी नीड टू नो अबाउट. एंड इस टॉपिक को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल दिस टॉपिक एज वेरिएबल variables naming convention. So we call this topic bachcho as variable naming convention. The first rule that we need to talk about, variable names, spaces are not allowed in variable names. So variable names के अंदर बच्चों आपके पास spaces allowed नहीं होती. एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डिफाइन करा, स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू बच्चों आमना. तो बच्चों दिस इज रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है भाई? यू कैन सी हमने यहाँ पे स्पेस दे दी. दिस इज नॉट अलाउड. सो व्हाट विल बी द करेक्ट वर्जन? The correct version will be student name and so on. So this is the correct model बच्चों. साथ we are going to talk about that underscore stuff. That's the third rule. Moving forward, the next rule, variable names cannot start with a number. सर मतलब? तो मतलब बच्चों इस बात का, one name is equals to, let's say Usaid. Two name is equals to Hashir. So बच्चों this is wrong. वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता. सर फिर क्या करेक्ट मॉडल होगा? द करेक्ट मॉडल इज
name 1 and name 2. Number end में आ जाए बच्चों, that's fine. So this is the correct model of the variable naming convention. Moving forward to the third rule. Moving forward बच्चों to the third rule. Third rule आपको define करता है that variable names should be, variable names should not contain special characters. So variable names should not contain special characters. मतलब एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताया, अच्छा एक्सेप्ट सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं आपके पास, दैट स्पेशल कैरेक्टर इज एक्सेप्ट अंडरस्कोर. अब मैंने यहाँ पे डिफाइन किया बच्चों, लेट्स से स्टूडेंट at the rate of name. So this is wrong. The correct model will be student underscore name. So this is the correct model. But बच्चों मैं रिकमेंड आप लोग को यही करूंगा कि आप लोग अंडरस्कोर भी यूज ना करो. सर क्यों? द रीजन इज कि बच्चे क्या करते हैं, अंडरस्कोर यूज करने जाते हैं और वो गलती से क्या लगा देते हैं, हैश लगा देते हैं, वो डैश वाली लाइन लगा देते हैं. अगर ये एग्जामिनर ने देख लिया तो दैट्स रॉन्ग. एग्जामिनर वोंट बी गिविंग यू मार्क्स फॉर ऑन दैट. आपका एग्जामिनर आप लोगों को नंबर नहीं देगा ऑन दैट स्टफ. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, द फोर्थ रूल, variable names should be meaningful. सर मतलब इस बात का, दिस मीन्स मैंने बोला एज इज इक्वल्स टू ए ग्रेड. एज इज इक्वल्स टू ए ग्रेड. तो बच्चों दैट डज नॉट मेक सेंस. अगर मैं यहां पे करता हूं ग्रेड इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहां पे करता हूं ग्रेड इज इक्वल्स टू ए, सो दैट्स फाइन. बट बच्चों एज इज इक्वल्स टू डजंट मेक सेंस. तो वेरिएबल का आपका नाम सेंसिबल यूज करना है अब आप लोगों ने. लाइक नेम के अंदर नेम स्टोर करवाने, स्टूडेंट का नाम है तो स्टूडेंट नेम, रिजल्ट है तो रिजल्ट, टीचर का कोई नेम है तो टीचर नेम. तो वेरिएबल के नेम सेंसिबल होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए. ठीक है. सो दीज आर द 4 रूल्स बच्चों दैट यू नीड टू रिमेंबर whenever we are going to perform the pseudo course. Moving forward, अब बच्चों हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स आते हैं that you need to understand. These operators are called relational operators. So when we talk about relational operators, so one of the relational operator that is, this is we are going to use for greater than or less than. This is the symbol greater than, equals to, greater than, equals to. अगर आप लोगों ने एग्जाम में बच्चों ये यूज करा ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए, सो दिस इज टोटली रॉन्ग. गलत है ये, यू कैन नॉट यूज. अब आप लोग ये सिंबल यूज नहीं कर सकते. Now another symbol that we have is less than, equals to. So this is
less than equals to less बच्चों ये करेगा so and to oops my screen went आगे वापस अच्छा जी we have a question sir is there space between greater or equals to symbol नहीं स्पेस नहीं है मिले में बिल्कुल इट्स लाइक मैं और खूबसूरत बनाऊं अगर तो ग्रेटर देन अच्छा नहीं बना भाई ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ठीक है मोहम्मद सो दिस इज not equals to and another symbol that we have is if you want to compare two variables so equals to हम लोग यूज करेंगे for comparing two variables we are going to use this symbol ठीक है so these are called relational operators another symbol बच्चों that we have these operators are called arithmetic operators so when we talk about arithmetic operators addition के लिए भाई plus subtraction के लिए minus multiplication के लिए asterisk division के लिए /, power के लिए बच्चों this symbol so these are the arithmetic operators that we are going to use another symbol बच्चों that we have these are called logical operators we call them as logical operators so we are having three logical operators in our syllabus and or and not so when we talk about बच्चों these logical operators तो आप लोगों को पता होना चाहिए how we apply these logical operators let's say we are having logic नहीं बोलते इसको let's say condition this is condition 1 बच्चों was true false condition 2 was true false अब अगर इन दोनों कंडीशंस के बिटवीन मैं एंड लॉजिक अप्लाई करता हूं तो एंड लॉजिक के अंदर बच्चों क्या होता है अगर आपकी एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या होगा इट विल बी फॉल्स एंड लॉजिक बच्चों ट्रू जब होती है जब दोनों कंडीशन आपकी ट्रू हो तो आपके पास आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा ट्रू आएगा सो इफ एनी वन ऑफ द कंडीशंस इज फॉल्स तो एंड लॉजिक क्या बताती है आपको ओवरऑल रिजल्ट विल बी फॉल्स नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑर लॉजिक के अंदर कोई एक कंडीशन भी अगर आपकी ट्रू हो गई ओवरऑल रिजल्ट विल बी ट्रू सो ट्रू फॉल्स और नॉट क्या करता है बच्चों नॉट इज एक्चुअली अपोजिट अगर मैं निकालूं यहां पे कैलकुलेट करूं नॉट ऑफ कंडीशन 1 का अगर मैं नॉट कैलकुलेट करूं तो भाई देखो यहां पे ये क्या है ट्रू तो नॉट क्या हो जाएगा अपोजिट इसका फॉल्स अगर यहाँ पे ये ट्रू तो इसका नॉट क्या हो जाएगा फॉल्स अगर ये यहाँ पे फॉल्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इट विल बिकम ट्रू एंड सो ऑन so these are the logical operators that we are going to use in our
coding stuff. So we talked about बच्चों logical statements, logical operators, arithmetic operators, relational operators. We talked about the variables, the naming convention of the variables. What are variables? We talked about the data types: date, boolean, char, real, integer, string. We talked about algorithms की दो types हैं, flowcharts and pseudocodes, and currently we are just going to focus on pseudocodes. We talked about the subject combination as well, and बच्चों मैंने आप लोग को explain करा कि मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करा कि ये सारी चीज हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग डिटेल में देखेंगे इन सूडो कोड्स। आज इसको हम लोग बच्चों यहीं तक होल्ड करेंगे। हम लोगों ने सिलेबस भी, हाँ, वी डिस्कस द सिलेबस एज वेल। हमने सिलेबस को भी डिटेल में डिस्कस करा कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है इन पेपर 2, एंड आई टोल्ड यू पीपल दैट इट्स अ टोटली न्यू सिलेबस। बहुत सारा कंटेंट, लाइक 40-50% कंटेंट इज फ्रॉम ए लेवल्स। ए लेवल्स से एग्जामिनर ने पिक करके ओ लेवल्स के अंदर इंक्लूड कर दिया है। सो आप लोग को ए लेवल्स कंप्यूटर साइंस काफी इजी हो जाएगी आप लोग के लिए, लेकिन मोर ओवर आप लोग को नया कंटेंट ग्रैब करने के लिए यू नीड टू स्पेंड टाइम, एंड ऑफ कोर्स आई एम टीचिंग यू। तो हम लोग इंशाल्लाह ताला बिफोर योर विंटर ब्रेक्स, बिफोर योर मिड ईयर, मैं आप लोग को मैक्सिमम पेपर 2 कंप्लीट करवा दूंगा। आप लोग के फ्रेंड्स वगैरह को जिनको भी बच्चों कंप्यूटर साइंस का पेपर 2 पढ़ना हो, बिकॉज बहुत ज्यादा बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं पेपर 2, तो अभी तो पहली क्लास हुई, आई विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग, यू कैन शेयर द रिकॉर्डिंग विद देम एज वेल, ताकि वो ग्रुप एज सून एज पॉसिबल ज्वाइन कर लें। फिर बाद में ज्वाइन करेंगे तो उनका बहुत सारा कंटेंट क्या होता है, मिस आउट हो जाता है। ठीक है, तो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।